If you have any doubt from last lecture, please raise your questions. Otherwise, we can move to the next topic. Any doubt from last lecture? No, sir. Okay. So today's topic is logarithmic decrement. Logarithmic decrement. So it is important from exam perspective, and some questions are asked from this derivation and sometimes the numericals from this topic. Now, in last lecture, we have derived the equation for motion of free damped vibration, right? So, and we have also seen the uh, displacement versus time graph. So, the displacement versus time graph, the displacement will reduce like this. Let me draw it like this. So, the displacement will reduce like this. Okay, is it clear to you? I have drawn this curve before. Yes, sir. Now in this curve we should notice one thing, that displacement is reducing in each cycle. After each cycle, displacement will reduce, right? Now from this that means there is some decrement. There is some decrement of the displacement in the each cycle. Okay. Now this logarithm, you can write one note. So logarithmic decrement is a concept. You can write this, right? Logarithmic decrement is a concept used to measure the damping factor. Logarithmic decrement is a concept used to measure the damping factor of single degree of freedom system. Okay. হ্যালো স্যার, Yes. বললাম যে আরেকবার বলবেন। Good. Logarithmic decrement is a concept used to measure the damping factor. Logarithmic decrement is a concept used to measure the damping factor of single degree of freedom system. Full stop. Okay, done. হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. Then next line, it is based on the measure. It is based on the measure it is based on the measure of the decay. I'm repeating. It is based on the measure of the decay of two successive amplitude. This is the main important line about this logarithmic decrement. So it is based on the decay, DECAY decay, okay, of two successive amplitude. Next line, logarithmic decrement is defined as the natural logarithm of
two successive amplitude. So what we have to do here, it is written in this line. So basically in the free undamped or free damped version, right? Free damped vibration, right? Yes, sir. In case of free damped vibration, we know the equation of motion, and we also know the displacement versus time variation, like this. We have drawn it here. Now the logarithmic decrement is defined as the natural logarithm of two successive amplitude. That means, see, the first cycle, for the first cycle, this is the maximum amplitude. For the second cycle, this is the maximum amplitude. Okay. So second cycle, in the second cycle, just wait, please. So students, the logarithmic decrement, in this logarithmic decrement, we have seen that this amplitude reduces in each successive cycle. See, this is the first cycle, this is the maximum amplitude. In the second cycle, this is the amplitude, and in the third cycle, this is the amplitude. Okay, so we can easily understand that in each cycle, the amplitude reduces in the free damped vibration case. Okay, now logarithmic decrement will be something which is defined by natural logarithm. That means you have to take the logarithm of two successive amplitude. Okay, the ratio of the two successive amplitude. Suppose it is x1 and suppose it is x2. So logarithmic decrement is ln natural logarithm. Okay, in by natural logarithm of x1 by x2. Is it clear, students? Hi, sir. So Yes, sir. natural logarithmic decrement is defined as the natural logarithm. That means ln, जो हम लोग log लेते हैं, log तो वो तो 10 बेस है, बट अगर e बेस लेना है तो उसको बोलते हैं natural logarithm. तो ln of x1 by x2. X, what is x1? What is x2? These will be two successive amplitudes. Suppose you are taking x2, then you should consider the x3, x2 by x3. Okay, x2 by x3. And if you consider x4, देन x3 by x4. सो सक्सेसिव जो एम्पलीट्यूड होगा उसका रेशियो जो होगा उसका हम लोग नेचुरल लॉगरिथम लेंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ln x1 by x2, राइट? यू अंडरस्टूड? सर और एक बार रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, कहाँ से कौन से रिपीट करें बोलो तो? सर मतलब लॉगरिथम डिक्रीमेंट मतलब बेसिकली क्या होगा सर इसमें? ठीक है, फिर से बोलते हैं स्टार्टिंग से. हाँ, तो देखो हम लोग फ्री डैम्प वाइब्रेशन का जो इक्वेशन है वो हम लोगों को मिला है, दैट इज इक्वल टू एक्स e टू द पावर माइनस एन टी. उसके बाद c1 cos रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टी प्लस c2 sin root under p square minus n square t. So we have got this equation before. Okay, and from this equation we have seen the displacement versus time graph. It looks like this. Now in this graph we can easily understand that जो हर एक साइकिल के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाता है ना? in each successive cycle, after one cycle displacement और maximum amplitude reduces. यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है ना, फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम है दैट इज फॉर द सेकेंड साइकिल. सो इन ईच सक्सेसिव साइकिल amplitude reduces.
Now, this logarithmic decrement is what? It is defined by the natural logarithm of the ratio of two successive amplitude. That means if you consider these two, then this is first one, this is second one. If you consider these two, then this will be the first one, this will be the second one. Okay, so each successive one. Okay, एक के बाद दूसरा जो है उसका रेशियो लेना है. So if we consider these two cycle, first two cycle, then first x1 is the amplitude of the first cycle, then x2 is the amplitude of the second cycle. Then x1 by x2 is that you will get a ratio. Then उसका अगर हम लोग नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, है ना, log लेंगे, log बेस e, उसको हम लोग ln से लिखते हैं ना, so we write it like this कि ln, so इसको कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. So this is the logarithmic decrement. So it is based on the decay. So why there is some decay in the amplitude? So to understand how much decay is happening in this motion, that to understand that we should find the logarithmic decrement. Okay. So it is a concept used to measure the damping factor. Damping किस level का है इसमें, बहुत ज़्यादा है कि कम है. So to understand that, we can proceed with this logarithmic decrement. Is it understood? Yes, sir. So our next task will be to find this ln x1 by x2. टू सक्सेसिव साइकिल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका रेशियो निकालेंगे एंड उसका ln लेंगे, log बेस e लेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा. सो दिस इज आवर टास्क. ओके, तो न्यूमेरिकल जो है और डेरिवेशन जो है, मतलब ये क्या होगा इसका वैल्यू, वो निकालने का जो टास्क है, दैट इज द डेरिवेशन पार्ट. एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस ln x1 by x2, that value will be used in the numerical to solve the numerical. Okay. Okay. Now after this line, you can note the equation of motion of three damped vibration is x equal to, write this equation, e to the power minus nt c1 cos e square minus n square. You should remember this equation, c2 sin e square minus n square t. Now at any instant when t equal to t1, okay, so we will find the value of displacement or amplitude at time t equal to t1. Then again we will find the amplitude after t1 plus time period. Are you getting it? हम लोग t1 टाइम में एक रैंडम टाइम लेंगे, इसमें हम लोग जैसे कि t इक्वल t1 है, उसमें हम लोग ये टाइम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है ना, एम्पलीट्यूड निकालेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, t1 के साथ उसका नेक्स्ट साइकिल का अगर चाहिए तो हम लोग को ये टाइम में निकालना होगा, है ना. इफ वी वांट टू फाइंड द नेक्स्ट एम्पलीट्यूड आफ्टर नेक्स्ट साइकिल, एक साइकिल एग्जैक्टली वन साइकिल के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, t1 के साथ प्लस t ऐड करना होगा, तब जाके जो टाइम होगा उस टाइम में हमारा एम्पलीट्यूड क्या है वो निकालना है. दैट विल बी योर x2 एंड इट विल बी योर x1. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this equation, please replace t by t1 and x by x1. Okay. So x1 is equal to e to the power minus n t1, then c1 cos e square minus n square t1 plus c2 sin e square minus n square t1. So this is the amplitude at time t equal to t1. Now I said in the beginning
that logarithmic decrement is the ratio of two successive amplitude. So if it is x1 at time t equal to t1, then after next cycle, that means after t1 plus t is not a time period, उसी time period के बाद, क्योंकि exactly उसी time t exactly t जो capital T है time period के बाद ही वो cycle repeat exactly वो चीज आता है ना. So that's why to find the next amplitude after the cycle, we should add t1 plus t. Okay, is it Yes. okay? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. next is, so next page. Okay, so next, positive amplitude will occur at time t equal to t1 plus t. Positive, why positive? Because if we add t by 2, then it will be negative. Okay ना? So that's why next positive amplitude will occur at time t equal to, देखो ये साइकिल जो था, वो जो कर्व था, वो ये था. देखो अगर हम लोग यहाँ से इसका गैप लेते हैं ना, ये डिफरेंस बिटवीन द टाइम बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इट विल बी एग्जैक्टली कैपिटल T. बट इफ वी ऐड t by 2, देन इट विल बी एग्जैक्टली नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ना. इसलिए लिखा है कि नेक्स्ट पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हमें उसी पॉइंट को लेना है एग्जैक्टली टू सक्सेसिव साइकिल्स. That's why it will be added by t, capital T, time period. So next positive amplitude will occur at t equal to t1 plus t. Now you know what is the value of t, capital T, that is 2 pi root under p square minus n square. So if you have if you have attended the last lecture, you can understand that this capital T will be 2 pi by root under p square minus. x2 e to the power minus n t will be t 2 pi by p square minus n square. Is it okay? Yes, sir. t के जगह पे हम लोगों को ये बैठाना है t1 प्लस t, और t हमारा ये वाला है ना. तो t के जगह पे हमें ये बैठाना है c1 cos p square minus n square, then t1 plus 2 pi by root under p square minus n square. Okay, c2 sin p square minus n square, t के जगह पे हमें बैठाना है t1 plus 2 pi by p square minus n square. देखो check, please check it. Yes, sir. So now x2 is equal to, or you can write e to the power minus n t1 to the power minus 2 pi n p square minus n square. इंडेक्स का जो मैथमेटिक्स था उसमें हम लोग ये कर सकते हैं ना, जैसे कि e to the power a plus b अगर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं e to the power a into to the power b. Similarly here also ये n को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे. सर हेलो सर. हाँ, सर अपना फैक्टोरियल साइनটা কিছু কোনটা ফ্যাক্টরিয়াল সাইন দিয়েছে? না না এটা ফ্যাক্টরিয়াল না, factorial এটা ইনটু ও আচ্ছা. n t1 হ্যাঁ.
So we are multiplying this minus n within this bracket. So then it will be in this format. Then you can use this. Okay, to the power a into e to the power b. Okay, those who are new to the index calculations, they should अंडरस्टैंड दिस। e to the power a plus b अगर है तो हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और वही किया हमें यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वही किया। तो this has becomes this. Now this c1 cos, see, we have to multiply this root under p square minus n square within this bracket. Okay, this is with the cos factor, टोटल जो है ये वाला चीज तो cos के अंदर में है ना, cos के अंदर में होगा। तो पहले से ही था, ऐसा नहीं कि अभी इस बार हो रहा है, ठीक है। टोटल जो है ये चीज cos के अंडर में होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, इसको इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो t1 आ जाएगा, बट इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ तो ये वाला और ये वाला इट विल बी कैंसिल्ड। ओके, सो इट विल बी सिंपली 2 pi plus p square minus n square t1. Please check it whether it is correct or not. हाँ सर, ठीक है। Similarly, sit, any confusion? Any confusion? Okay, no confusion. So sine, similarly here also same thing will happen. Just multiply this with this and this. Simple mathematics, simple algebra. Okay. Okay. Then what is cos 2 pi plus something, cos 2 pi plus theta क्या होता है? cos theta. देखो, all sin ऐसा आता है ना, all sin tan cos, तो ऐसे घूमता है। सो इट इज पाई 2 पाई, नो 2 पाई ना, सर cos शायद স্যার फोर्थ সাইনের क्वाड्रेंट में জায়গায়, होता है। হ্যাঁ हाँ? স্যার সাইনের জায়গায় অল হবে, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আপনার অল এস, এখানে না, হ্যাঁ ওটা এ আমি বা ভুলে সেক্ষেত্রে গেছি। अच्छा हाँ ठीक আছে, তো দেখো তো ঠিক है, ऑल यहाँ पे साइन है, হ্যাঁ হ্যাঁ এ এস নিচে साइन টি ডান दिके एस। tan cos, cos तो हाँ सर। यहाँ पे हुआ पाई, यहाँ पे हुआ 2 पाई, 2 pi के साथ something is there, so it is coming in this quadrant all, so it will be same sign, positive. Okay, so it will be x2 will be e to the power minus n t1 and e to the power minus 2 pi n by p square minus n square. Hmm. Then c1 cos p square minus n square t1, एंड साइन का भी उसी तरह से है, ऑल में आ रहा है तो प्लस ही होगा। ओके, सो c2 sin रूट अंडर p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर t1, सिंपल। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि e टू द पावर 2 पाई n p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड x1, कैन यू राइट दैट? হ্যাঁ স্যার, ओके, यस सर। so from this if you find x1 by x2, x1 by x2,
So x1 by x2 will be e to the power प्लस हो जाएगा वो चीज 2 pi n root under p square minus n square. Correct? Correct, students? Yes, sir. Yes. Sir. Okay. Now, taking natural logarithm on both sides, ln x1 by x2 is equal to ln to the power 2 pi n p square minus n square. So ln का बेस क्या है? What is the base of E. ln? E. E. So it will be simply, तो क्या होता है वो चीज, ये जो रहता है बस वही हो जाता है Okay. 2 pi n. इसलिए इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स आना चाहिए, इसलिए क्लास 10 के बाद नहीं जाना चाहिए इंजीनियरिंग में. I hope some students are from class 10 background. Okay, Yes, sir. so this is denoted by delta. Okay, delta logarithmic decrement is denoted by delta. Hmm. It is equal to ln x1 by x2, that is equal to 2 pi n root under p square minus n square. Okay, Yes, sir. so this is one format of the logarithmic decrement. The next format, delta is equal to, let us find the next format, n by p. p से डिवाइड करते हैं ऊपर, है ना, नीचे भी p से डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा. ऊपर p से डिवाइड करते हैं, नीचे भी p से डिवाइड करेंगे, बट रूट के अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो p स्क्वायर बाई p स्क्वायर, तो ये 1 रहेगा और n by p स्क्वायर. इज इट करेक्ट? प्लीज चेक इट. हाँ सर, करेक्ट है. Now take n by p, इसका नाम क्या है वो बोलो मुझे. What is the symbol name? Zeta. I don't know. I forgot the name. Whatever it is called critical damping ratio. Critical damping ratio, zeta. Please check it in the internet. I will check it. Zeta symbol. Yes, I think it's zeta. Okay, it is zeta, I think. Please confirm it if you have internet connection. Yeah, obviously you have internet connection. Please confirm it. Zeta in the lowercase format, it is shown like this. Okay, Yes, sir. so then logarithmic decrement delta is equal to 2 pi zeta by 1 minus zeta square. Okay,
Okay, sir. Usually zeta is very small. Okay, zeta is very small usually. So 1 minus zeta square is near about 0. No, it's near about 1. Because zeta is small, so zeta square will be more small. Okay, it's not it. So 1 minus something very small, that is equal to near about 1. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so delta is equal to 2 pi. So this is another format of the logarithm decrement. So this will be used in the numericals. This format will be used in the numericals. Third format is okay. So this is basically ln x1 by x2. So from this equation, zeta is equal to 1 by 2 pi ln x1 by x2. So this is another format from this derivation. So this is the third format. So you should remember, first you should remember this format, because if you remember this one, then you can derive this part in rough calculation. Quickly you can do that. স্যার নিচের ইকুয়েশনে দেখা যাচ্ছে না। এই তো আছে বাবা, সব দেখা যাচ্ছে, ঠিক শুনেই যাচ্ছে। ঠিক আছে, Yes, sir. so you should practice it, otherwise you cannot derive in the exams. But in online exam you can derive all this. Without any practice you can derive. Am I correct? Okay, so can we start a numerical from this topic? Okay, so it will take time. Okay, we will finish this numerical on attempt numerical in the next lecture. So if you have any questions from this, you can ask. Numericals and derivations both are simple in this topic. Logarithmic decrement. Both are simple. Numerical is also simple. Just 4 to 5 lines, simple lines. Yes. Any questions from this topic? No, sir. Okay. So you can leave now.